Assalamu alaikum to all the students and a very warm welcome to you all in our next lecture. This is actually English language class and this is lecture number 14. Actually this is the reinforcement of tenses and translation. As yesterday you had your monthly test, okay, of language. Hope you all have done very well. So many comments I have also received about their marks. um, Now I want to connect the present tense and the past tense related to its translation, because in the Google form you cannot have the translation exercise. Okay, we have got the question and answers related to the explanation of tenses, voices, kinds of noun, adjective and adverb, but we cannot solve the translation, okay, of Urdu to English. So I decided to connect your present tenses and translation to the past tenses and translation, so that it will be very convenient for you to relate each other. Okay, so we should start tenses and translation of past tense. Okay, this is actually the revision, but it will be helpful for you to identify the present and past tense identification. Now, the verb that refers to past time is said to be in a past tense, means the present time verb shows the present tense, okay, and the verb which is in the past tense, which refers to the past time, okay, which tells us about something about past time, so it is said to be the past tense. We identify the tense when we look at the verb form. ठीक है, when the verb is in present tense or first form of the verb refers to the present tense, present time, so the sentence, the whole sentence is said to be in a present tense. But when we got verb in the second form and it refers to the past time, so the sentence, the whole sentence is said to be in the past tense. It means that how do we identify that sentence tense? We identify the tense with its verb, that which in which form the verb is in the sentence. So द होल सेंटेंस टेंस, पूरे सेंटेंस का जो टेंस है, जो टाइम है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द वर्ब. ठीक है, सो द वर्ब इज हैविंग अ वेरी vital role in the sentence. Obviously the doer of the work and the thing which is object on which we are performing the work, it is also very important, but the vital role is played by the verb, because it tells us the time when the work has performed. ठीक है, किसने परफॉर्म किया, किस चीज़ पर परफॉर्म किया. दे आर ऑल्सो हैविंग अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल, दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस. बट वर्ब हमें बताता है कि विच टाइम, एट विच टाइम द वर्क हैज़ परफॉर्म, कि वो जो वर्क हुआ था या हुआ है या हुआ होगा, एट विच टाइम इट हैज़ बीन परफॉर्म्ड. ठीक है, so in the past tense we are having four different forms, like past indefinite and past simple, both are same. ठीक है, past indefinite कह लीजिए या और past simple, they both are having the same sense, same meanings. Okay, this is the single type. Then past continuous, we have past continuous is also called past progressive. ठीक है, जिस तरह present continuous is also called present progressive, so past continuous is also called past progressive, but at your level it is not written anywhere in your book, in your course syllabus, that's why I haven't written over here. ठीक है, past continuous means past progressive, they both are having same meaning. Then past perfect, then past perfect continuous और past perfect progressive also. ठीक है, continuous को हम progressive के word के तौर पे भी use करते हैं. Now first of all we are having past indefinite tense. ठीक है, past indefinite tense or past simple tense. Simple past, past simple tense, both are same. In this tense, the past indefinite tense, also known as simple past tense, is used to indicate a finished or completed action or task that occurred or happened at a specific point in time in the past. Means when we talk about the present time, तो
प्रेजेंट टाइम में हम व्हाट वी टॉक अबाउट इन प्रेजेंट टाइम, वी टॉक अबाउट आवर हैबिट्स, कस्टम एंड रूटीन विच वी परफॉर्म इन डेली बेसिस, और रूटीनली वी आर हैविंग द सेम हैबिट्स, ठीक है। तो वो हमारे पास्ट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। बट इन पास्ट इंडेफिनिट सम हैबिट्स, सम वर्क विच हैज़ फिनिश्ड, completed or performed, okay, या हो गया हो, it occurred or it happened or it performed, but it is completed and finished at a specific point in time in the past, ठीक है। at a specific point in time in the past, past time की बात हो रही है, when we perform some action, when a task has been performed, has happened or occurred in a specific point in time in the past, okay, it is called past indefinite tense. अच्छा, past indefinite tense is very much related to the perfect tenses also, but past indefinite tense started in the past and its aspect, its उसका रिएक्शन, उसकी एवरीथिंग हैज़ completed and finished at the specific point of time, ठीक है। इट हैज़ नो आस्पेक्ट इन द फ्यूचर, और उसका आगे कोई और आस्पेक्ट नहीं होता, okay. But perfect tenses, when you will come when we will come to the perfect tenses, you will get to know this, the difference exactly, कि perfect tenses whatever has happened in the past, उसका कोई ना कोई रिलेशन, कोई ना कोई aspect we are also facing in the present, ठीक है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पास्ट एंड परफेक्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट और परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है, दैट पास्ट इंडेफिनिट में वट एवर द वर्क हैज़ परफॉर्म, इट इज़ परफॉर्म इन द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम in the past time, and the aspect everything is completed over there, it is finished, okay. उसका कोई भी impact हमारे नेक्स्ट टाइम पर नहीं आता। बट परफेक्ट टेंसेस व्हेन द वर्क इज़ completed, उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट हमारे प्रेजेंट टाइम पर आ रहा होता है, दैट्स वाई वी यूज़ हैज़ और हैव, ठीक है। अच्छा, नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज द डोर ऑफ द वर्क, obviously verb की first to second form is showing that it is a past simple tense, and the object which is on which we are performing the work. For example, I spoke the truth, he she spoke the truth, they spoke the truth. Why I have written over here I and he she and they, because I want to tell you that whether it is I, okay, whether it is singular, subject is singular, or whether the singular subject is plural, we have to use second form of the verb with each and every subject. No s or es is over here, okay. Present indefinite में we are having s or es in the in the sentence when we are having singular subject, but in past indefinite we are not having anything with the v2, it is just first sorry verb की second form with each and every subject, ठीक है। Now, these are some examples. He drank tea, okay, second form of drink. I got up at 7 a.m. Okay, see the difference you can see over here also, that he drank tea. उसने चाय पी, ठीक है, चाय पी, ख़त्म हो गया काम, we are not having any impact right now, ठीक है। चाय पी, the work is performed at that time, the task has occurred at that time, and the finished. Okay, I got up at 7 a.m. We celebrated Independence Day on 14th August. I took a glass of milk. ठीक है, everything is finished in a specific point in time in the past. ठीक है, everything stopped over there. Now each tense can be used in different forms of sentences. Obviously we are having some forms of tense, ठीक है। these are the forms of tenses: past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous, and these are the forms of sentences, okay। This is the difference between, there is a major difference between forms of tenses and forms of sentences, ठीक है। forms of sentences are affirmative, negative, interrogative. We are also having some more other forms like positive भी होता है, intro negative भी होता है, okay। तो but it is not included in your course or syllabus. You have to just focus on affirmative, which is simple sentence जिसमें बात बताई जा रही है, ठीक है, whether it is negative or
पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं। एफर्मेटिव में भी दो काइंड्स होती हैं। वी हैव लाइक बात बताई जा रही है, मैं चाय पीता हूँ, मैं चाय नहीं पीता हूँ। आई ड्रिंक टी, आई डू नॉट ड्रिंक टी। ठीक है, तो in affirmative is also categorized in positive and negative, but we consider affirmative in a simple sentence which has not having negativity. Okay, जिसके अंदर हम not को use नहीं करते. And then we have negative in which we use not, जिसमें हम नफ़ी कर रहे हों या बात को मना कर रहे हों, ना कह रहे हों. And then we are having interrogative also in which we are asking something. ठीक है, and we have to put question mark at the end of the each and every interrogative sentence. Now we are having this practice exercise. He drank tea. Okay, the negative will be he did not drink tea. Okay, the negative will be he did not drink tea. We were having two helping verbs of present indefinite tense, but here we are having only one, which is past helping verb, which is did. Okay, he did not drink tea. And when we use do or does का जब हम second form use करेंगे, did is actually the second form of do and does. ठीक है, तो when we are using helping verb second form, so we will convert the main verb second form into first form. Okay, ठीक है, when we because in the same sentence, in a single sentence, we cannot use two सेकेंड फॉर्म्स. ठीक है, हम दो सेकेंड फॉर्म्स यूज़ नहीं कर सकते. दैट्स वाई वी विल यूज़ हेल्पिंग वर्ब सेकेंड फॉर्म, एंड जो फर्स्ट फॉर्म एंड जो सेकेंड फॉर्म हमने एफर्मेटिव में यूज़ की थी, वो हम उसको फर्स्ट फॉर्म में अगेन इंटरचेंज कर देंगे, सो दैट इट विल बी द राइट सेंटेंस. ही डिड नॉट ड्रिंक टी, डिड ही ड्रिंक टी. ओके, and then question mark we will be having at the end of the interrogative sentence. Same as it is, we are having here negative sentence, we have to make affirmative and interrogative. So what will be the sentence? They left, because we are using here did not, that's why we are using first form of leave. ठीक है, leave, this is the first form. But when we will make affirmative, so we will not use did not. ठीक है, did तो हम use नहीं करेंगे affirmative में, तो leave की first form will be changed into second form, which is the past form of leave. और affirmative में obviously we always use second form V2. So they left for school at 7:30. Okay, now make its interrogative. What will be the interrogative of the sentence? They left for school at 7:30. They did not leave for school at 7:30. And did they leave for school at 7:30? ठीक है, so these are the different forms of sentences. ठीक है, now if you have got any problem here up till now, you may ask. Okay, I'm just going towards the translation. ठीक है, और अगर यहाँ तक किसी को इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो दे कैन आस्क मी, दे कैन राइट देयर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. आफ्टर दिस ट्रांसलेशन आई विल आंसर. नाउ कम टू द ट्रांसलेशन. मैंने एक कैमरा ख़रीदा. अच्छा, सो मैनी स्टूडेंट्स हैव रिटन कैमरा को कमरा लिखा हुआ है. ओके, तो उन्होंने उसकी इंग्लिश भी ऑब्वियसली वो कैमरा को उन्होंने रूम लिखा हुआ है. ओके, व्हेन आई चेक द कॉपीज़ आई हैव करेक्टेड ओवर देयर, मैंने वहाँ करेक्शन कर दी थी, बिकॉज इट्स नॉट कमरा, इट्स कैमरा. ठीक है, तो वो कमरा को उन्होंने रूम कर दिया था इन से, वो भी ठीक है. ओके, इट्स ओके, मगर कमरा को फिर आप ऊपर आपने उर्दू में कमरा लिखा हुआ है, नीचे आप आई बॉट अ कैमरा लिख रहे हैं, तो वहाँ मैंने उसको करेक्शन करके ठीक किया है. अदरवाइज़ अगर किसी ने लिखा है कि मैंने एक कमरा ख़रीदा एंड मेक्स इट्स ट्रांसलेशन आई बॉट अ रूम, तो इट्स ओके, उसको मैंने करेक्ट किया है, उसको मैंने चेंज नहीं किया, बिकॉज द ट्रांसलेशन इज़ ओके, डजेंट मैटर. अच्छा, मैंने एक कैमरा ख़रीदा, आई बॉट अ कैमरा, वी हैव टू यूज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय की सेकेंड फॉर्म इज़ बॉट. ओके, नाउ द डॉक्टर ने मरीज़ का ऑपरेशन किया. सो मैनी स्टूडेंट्स हैज़ रिटन द डॉक्टर ऑपरेटेड और डिड ऑपरेशन ऑफ पेशेंट, वो भी ठीक है, डिड इज़ ऑल्सो ओके, बट डॉक्टर ने मरीज़ का ऑपरेशन किया, द डॉक्टर ऑपरेटेड अपॉन द पेशेंट इज़ द करेक्ट
affirmative because it's an affirmative sentence. हम did कहाँ यूज़ करते हैं? In negative and interrogative. Try to make affirmative sentences without helping verb. ठीक है, अगर तो वो it's very inevitable or it's you can say you cannot avoid did, तब तो आप यूज़ कर सकते हो, बट हेयर यू कैन अवॉइड. एफर्मेटिव में वी डोंट यूज़ हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, वी जस्ट यूज़ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो जहाँ जहाँ एफर्मेटिव सेंटेंसेज हो वहाँ डिड को यूज़ करना अवॉइड कीजिएगा. ठीक है, डॉक्टर ने मरीज़ का ऑपरेशन किया. द डॉक्टर ऑपरेटेड अपॉन द पेशेंट. किसी चीज़ के ऊपर काम किया है तो वी यूज़ अपॉन ओवर हेयर. ठीक है, उन्होंने हमारे मशवरे पर अमल किया. दे एक्टेड अपॉन आर एडवाइस. ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर काम किया. दैट्स वाई वी आर यूजिंग अपॉन ओवर है. उस्ताद ने सबक अच्छी तरह पढ़ाया. द टीचर टॉट द लेसन वेल. ओके, वेरी वेल भी हो सकता है. द टीचर टॉट द लेसन इन अ गुड मैनर. ठीक है, लोगों ने चोर पकड़ा. पीपल कॉट द थीफ. थीफ की स्पेलिंग यू पीपल ऑलवेज राइट रॉन्ग. आप हमेशा THEIF थीफ नहीं होता, THIEF थीफ होता है. प्लीज़ वॉट एवर आई एम करेक्टिंग इन योर कॉपीज़, जो मैंने करेक्शन की है प्लीज़ उसको ज़रा गौर से देखिएगा एंड देन रियलाइज़ वॉट मिस्टेक्स यू आर डूइंग अगेन एंड अगेन. ठीक है, उन्होंने हमारी मदद ना की. नाउ यू हैव टू यूज़ हेयर डिड बिकॉज दिस इज़ द नेगेटिव सेंटेंस. दे डिड नॉट हेल्प अस. Okay, and when we make its interrogative, did they help us, not will not be coming in negative sentence. ठीक है, अच्छा जी. Now we are moving towards past continuous tense as you are not having any questions regarding past indefinite. ठीक है, so we are moving towards past continuous tense. Past continuous tense is also called past progressive tense. ठीक है, अच्छा, the past continuous tense is used to describe actions that began in the past and often continued for a short period of time after the action started. Means it is also about past, it has no impact in the present. Okay, वहीं start हुआ था एंड इट वॉज कंटिन्यूइंग, वो ख़त्म नहीं हुआ था इन द पास्ट टेंस. ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वी हैव द वर्क विच हैज़ स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट टाइम. ठीक है, बट इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस the started time is given of the action performed and it was still continued. ठीक है, it was still in the continuation for a short period of time. वो थोड़ी देर के लिए उस वक्त चल रहा था. That's why we use the past continuous tense. ठीक है, structure will be subject plus helping verb. Helping verbs are was and were. Okay, plus V1 ing form. Obviously continuous and progressive tense are both same and in continuous tense we use ing form of V1. ठीक है, plus object. For example, I was speaking the truth. He, she was speaking the truth. They were speaking the truth. Again, I के साथ we will use was. He, she, these are singular subjects and we will use was. But they is plural subject. Okay, so we will use were over here. It means that all the singular subjects and with I, we have to use was, and all the plural subjects we will be using were. अच्छा, one more thing that we are also sometimes have states. ओके, स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स पर्सन की हालत को भी डिस्क्राइब किया जाता है विद द सेम टेंस. ओके, ऑल्दो द वर्क इज़ नॉट परफॉर्मिंग ओवर हेयर, आईएनजी फॉर्म नहीं आती इसमें, बट वी यूज़ continuous tense to represent the states of the person, states of the things. ओके, कि वो टीचर है या वो, इट मीन्स दैट ही इज़ इन द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग. ठीक है, वो डॉक्टर है, ही वॉज अ डॉक्टर, तो इट मीन्स दैट ही वॉज इन द प्रैक्टिस ऑफ डॉक्टरी. ठीक है, दैट्स वाई वी यूज़ कंटिन्यूस टेंस टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ बीइंग. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ड्रिंकिंग टी. ठीक है, ही वॉज ड्रिंकिंग टी मीन्स वेन आई रीच टू हिज होम ही वॉज ड्रिंकिंग टी. जब मैं उसके घर पहुंचा तो वो चाय पी रहा था. ओके, सो फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द वर्क वॉज कंटिन्यूड एट दैट टाइम इन द पास्ट. ठीक है, उस वक्त काम चल रहा था. फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द वर्क वॉज गोइंग ऑन एट दैट टाइम. ठीक है, इन द पास्ट. द सन वॉज राइजिंग मीन्स सूरज निकल रहा था. ठीक है, दे वर गोइंग टू अ पार्क. जब मैं उनसे मिलने गया तो वो लोग पार्क जा रहे थे. ठीक है, इट मीन्स दैट
when I reached over there, their going action was in the continuation at that time. He was speaking truth, we were taking a glass of milk. ठीक है, these all are the examples of past continuous tense. Again, we are having three forms of sentences over here. These are the practice exercise of past continuous tense. Affirmative is we were going for picnic. Negative will be we were not going for picnic. Again, here in past indefinite tense, sorry, past continuous tense, you are having helping verb, so you don't need to do extra effort over here. Okay, you just have to attach not in negative with your helping verb. ठीक है, आपको just helping verb के साथ not को attach करना है to make its negative. Okay, और interrogative में भी you don't have to do anything, you just have to interchange the place of helping verb and subject. ठीक है, आपस में थोड़ा सा आगे पीछे करना है, then that's it. So what will be the negative? We were not going for picnic. Interrogative will be were we going for picnic, and then question mark. Then we have second exercise is affirmative. So we are not having affirmative. We have to convert negative into affirmative. Okay, Ali was not eating mango. Affirmative will be Ali was eating mango, and interrogative will be was Ali eating mango, then question mark. Then was she teaching English? She was not teaching English. She was teaching English. Okay. Now come to the translation. वो तेज दौड़ रहा था means the work was going on for a short period of time. He was running fast. ठीक है, he was running fastly, he was running fast. It's okay. हम गहरी नींद सो रहे थे. We were sleeping soundly or we were sleeping deeply. So many students has written deeply also. Okay, we were in a deep sleep. ये भी ठीक है, बट वी आर नाउ यूजिंग हेयर आई एन जी फॉर्म्स. ठीक है, वी वर इन अ डीप स्लीप वो हमारी स्टेट को बयान कर रहा है. ठीक है, हम गहरी नींद में थे और हम गहरी नींद सो रहे थे. बोथ ट्रांसलेशंस आर डिफरेंट बिकॉज द सेंटेंस मेकिंग इज़ डिफरेंट. ठीक है, अगर तो वो होता हम गहरी नींद में थे तो वो स्टेट को शो कर रहा है, देन इट वॉज राइट के वी वर इन अ डीप स्लीप. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये सेंटेंस लिखा है. इट वॉज राइट अकॉर्डिंग टू द सेंस, इट इज़ राइट, बट वी हैव टू ट्रांसलेट द उर्दू इनटू इंग्लिश. हमें सेंस नहीं देखना, हमें उर्दू की सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. तो रिमेंबर दैट जहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म को शो करना है यू हैव टू यूज वर्ब आईएनजी फॉर्म, और जहाँ स्टेट शो करनी है सो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट शोइंग द स्टेट्स. वो स्टेट्स को शो कर रहा है, बट इन उर्दू सेंटेंस वी आर हैविंग आईएनजी फॉर्म. ठीक है, हमें उर्दू सेंटेंस के अकॉर्डिंग आईएनजी फॉर्म को यूज़ करना चाहिए था. वी वर स्लीपिंग साउंडली, इट इज़ द राइट सेंटेंस. सेंस वहाँ भी सही है, बट यहाँ सेंस एक्यूरेट है, वहाँ सेंस एक्यूरेट नहीं है. ठीक है, कुत्ता रात को भौंक रहा था. द डॉग वॉज बार्किंग एट नाइट. बच्चे शोर मचा रहे थे. चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज. ड्राइवर कार तेज़ नहीं चला रहा था. द ड्राइवर वॉज नॉट ड्राइविंग द कार फास्ट. ठीक है, अगेन फास्टली ओके है, ठीक है. असलम क्रिकेट नहीं खेल रहा था. असलम वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है, नाउ कम टू द पास्ट परफेक्ट टेंस. अच्छा, the past perfect tense is used to show that something happened before another action in the past. Okay, it can also be used to show that something happened before a specific time in the past. Means past perfect tense we use to show that कोई ऐसा काम something happened before another action, कि किसी चीज़ के होने से पहले वो काम हो चुका था. Means we are having a little aspect impact of that previous work in the present time. ठीक है, वॉट आई वॉज सेइंग टू यू कि आइडेंटिफाई द सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस. उन दोनों में क्या डिफरेंस है कि पास्ट इंडेफिनेट का काम स्टार्ट होकर ख़त्म हो जाता है एंड देयर इज़ नो इम्पैक्ट right now we are having, but in the past perfect tense what is a difference that the work has started and finished at that time but before another action in the past that has happened already. ठीक है, जब मैं घर पहुंचा तो वो घर से जा चुका था. means in the present time you are having an impact. उसकी वजह से कोई ना कोई फ़र्क तो पड़ा होगा ना आपकी लाइफ पर, जब भी तो आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो. ठीक है, मीन्स कि वाई डिडेंट यू ब्रिंग योर ओन बुक फ्रॉम योर फ्रेंड, बिकॉज व्हेन आई रीच टू ब्रिंग द बुक ओके ही हैज़ ऑलरेडी गॉन. मैं क्यों बुक नहीं लेकर आया, क्योंकि जब मैं उससे बुक लेने उसके घर पहुंचा तो वो घर पर मौजूद नहीं था या वो घर से पहले ही जा चुका था.
ओके, सो इट मीन्स दैट इन पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट काम का आपका एक एक्शन परफॉर्म होने से पहले कोई वर्क परफॉर्म ऑलरेडी हो चुका होता है, दैट्स वाई इट कैन ऑल्सो बी यूज टू शो दैट समथिंग हैपेंड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। पास्ट टाइम में किसी एक स्पेसिफिक टाइम की जब हम बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट का काम उससे पहले परफॉर्म हो चुका होता है। स्ट्रक्चर विल बी हैज सब्जेक्ट प्लस हैज हैव की सेकेंड फॉर्म विच इज हैव, ओके, एंड इन द परफेक्ट टेंस वी विल ऑलवेज यूज V3, ठीक है। And then object, for example, I had spoken the truth, he she had spoken the truth, they had spoken the truth, ठीक है। इस दिस इज द सिंपल सेंटेंस विच इज एक्चुअली द हाफ सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको हम बढ़ाकर आगे इस तरह कंटिन्यू कर सकते हैं दैट आई हैड स्पोकन द ट्रुथ, आई हैड ऑलरेडी स्पोकन द ट्रुथ बिफोर हिज आस्किंग, के उसके पूछने से पहले ही मैंने उसको सच बता दिया था, ठीक है। तो एक काम होने से पहले ही काम परफॉर्म हो जाए, इट इज कॉल्ड द पास्ट परफेक्ट टेंस। Now these are some examples, he had drunk tea, ठीक है। when I went to reach when I reached to meet him, he had already drunk tea, कि जब मैं उससे मिलने वहाँ पहुँचा तो वो पहले ही चाय पी चुका था, ठीक है। आई हैड कुक द फूड व्हेन आई वेंट इनटू द किचन, जब मैं किचन में पहुंची, ही हैड ऑलरेडी कुक द फूड, जब मैं खाना बनाने किचन में पहुंची तो खाना पहले से उसने बना दिया था, बना चुका था, ठीक है। ही हैड स्पोकन द ट्रूथ, आई हैड डन माई वर्क व्हेन आई ऑफर्ड हिम टू हेल्प, ओके, जब मैंने उसको हेल्प ऑफर की, ही हैड ऑलरेडी डन हिज वर्क, तो वो पहले ही अपना काम ख़त्म कर चुका था। इट मीन्स द वर्क इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड, इज़ ऑलरेडी परफॉर्म्ड बिफोर सम एक्शन, किसी काम के होने से पहले ही वो वर्क परफॉर्म हो चुका होता है, तो देन वी यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ दीज आर सम प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। वी हैड completed the work, again you don't have to do a little effort in it, you have to just put not for negative, and interrogative mein you have to change the places of subject and helping verb. We had completed the work, we had not completed the work, had we completed the work, then question mark. Ali had not eaten mango, Ali had eaten mango, had Ali eaten mango, then question mark. Had I taught you English, I had taught you English, I had not taught you English, okay, so these are the past perfect tenses. Now come to the translation, हम पहले ही चाय पी चुके थे, we had already taken tea, ठीक है, आधा सेंटेंस है बट इट इज़ इन द पास्ट परफेक्ट। हमने ये खबर कल तक नहीं सुनी थी, वी हैड नॉट हर्ड दिस न्यूज़ टिल येस्टरडे, मेरे घर आने से पहले मेरा बेटा स्कूल जा चुका था। हेयर यू आर हैविंग द कंप्लीट सेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, दैट मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा बेटा स्कूल जा चुका था। द एक काम, बेटे के स्कूल जाने का काम ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका था बिफोर अनदर वर्क, ठीक है। तो माई सन हैड ऑलरेडी गॉन टू स्कूल बिफोर आई केम होम, ठीक है। जब मैं स्टेडियम पहुंचा तो मैच ख़त्म हो चुका था, व्हेन आई रीच्ड स्टेडियम द मैच हैड फिनिश्ड, ठीक है। अच्छा, वी कैन ऑल्सो इंटरचेंज द सेंटेंस, जैसे जब मैं स्टेडियम पहुंचा तो मैच ख़त्म हो चुका था, या मैच ख़त्म हो चुका था जब मैं स्टेडियम पहुंचा, बोथ आर सेम, ठीक है। लेकिन जिस सेंटेंस के साथ चुका आ रहा है या जिस सेंटेंस के साथ काम के ख़त्म होने को शो किया जा रहा है, यू हैव टू यूज़ हैड विद दैट सेंटेंस, क्योंकि हमारे पास इन दिस सेंटेंस वी आर हैविंग टू पार्ट्स ऑफ दिस सेंटेंसेस, ठीक है। वन सेंटेंस स्टिल हेयर फिनिश्ड बिफोर आई रीच द स्टेडियम, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो जहाँ गया, पहुँचा, आया, खाया, पिया, कंप्लीट नहीं है काम, यू हैव टू यूज़ simple present tense, and then the work, the half part, the another half part of the sentence जिसके साथ चुका, चुकी, चुके, ख़त्म हो गया, हो गई, थे आ रहा है, you have to use had over there, ठीक है। अच्छा, हमने इससे पहले इसको नहीं देखा था, वी हैड नॉट सीन हिम बिफोर, हमने ऐसा ख़तरनाक सांप पहले कभी नहीं देखा था, वी हैड नॉट सीन सच अ डेंजरस स्नेक बिफोर, ठीक है। नाउ कम टू द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। Past perfect continuous tense. The past perfect continuous tense, also known as the past perfect progressive tense, again which I told you already, shows that an action that started in the past continued up till another time in the past. Means कि कोई काम जो आपने पास्ट में स्टार्ट किया हो एंड इट इज़ कंटिन्यूड इन द पास्ट टाइम, ठीक है। बट द मेन थिंग इज दैट द स्टार्टिंग टाइम ऑफ द वर्क हैज़ बीन गिवन टू यू, कि इस टेंस में आपको
काम स्टार्ट कब हुआ था वो आपको इसके अंदर गिवन होगा. बट इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस, सिर्फ सिंपल कंटिन्यूस टेंस जो होते हैं उसमें हमें स्टार्टिंग टाइम गिवन नहीं होता. बस ये पता होता है कि द वर्क इज वॉज गोइंग ऑन, द वर्क इज गोइंग ऑन, द वर्क वॉज गोइंग ऑन, द वर्क विल बी गोइंग ऑन. ठीक है, हो रहा था, हो रहा है या हो रहा होगा. दिस इज गिवन टू अस, बट द स्टार्टिंग टाइम इज गिवन इन द परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है, कंटिन्यूस टेंस में स्टार्टिंग टाइम कभी गिवन नहीं होता. टाइम जब भी गिवन होगा कि इतनी देर से ये काम हो रहा था, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, दैट दिस इज द परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ठीक है. अच्छा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ हैव की सेकेंड फॉर्म हैड बीन. ठीक है, यू हैव टू यूज बीन विद दैट. Okay, and then object or since or for, you will use since for the point of time. Okay, and you will use for the period of time, duration of time, as I told you in the revised lecture of present tenses. I had been working in this company for 2 years. She had been working in this company for 2 years. They had been working in this company since 2018. ठीक है, when the point of time is given you have to use since, when the duration of time is given you have to use for. Now these are some examples. He had been drinking tea for 15 minutes, कि वो इतनी देर से चाय पिए जा रहा था. ठीक है. I had been cooking since morning, मैं मॉर्निंग से, सुबह से खाना बनाए जा रही थी. ठीक है. These are some examples. Now come to the practice exercise. We had been searching for half an hour. Again you are having here two helping words, so you have to put not in negative sentence. You have to put not between the two helping words. ठीक है. We had not been searching for half an hour. Had we been searching for half an hour, then question mark. Ali had not been eating mango since evening. Ali had been eating mango since evening. Had Ali been eating mango since evening, question mark. Had I been teaching English since 2018? I had not teaching English since 2018. I had been teaching English since 2018. Okay, now come to the translation. Again here you will be having the starting time of the starting time of the work performed. ठीक है. मैं दोपहर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था. आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस नून. अगेन आई टोल्ड यू दैट आर होल डे इज़ डिवाइडेड इनटू 4, 5, 6 सेक्शंस. ठीक है. मॉर्निंग है आपका, वैसे तो डॉन होता है स्टार्टिंग फजर का टाइम, देन मॉर्निंग, देन आफ्टरनून, फिर नून, फिर इवनिंग, फिर नाइट, and then midnight, and then again dawn. ठीक है. तो these are some sections of times of the day, so you have to use with every section you have to use since. यहाँ for नहीं आएगा, यहाँ since आएगा. We had been playing the match since 9 o'clock. Again point of time is given, so you have to use since. हम 3 बजे से तैर रहे थे. We had been swimming since 3 o'clock. वो 1 घंटे से ख़त लिख रहा था. He had been writing a letter for an hour because duration is given. वो 1 घंटा कौन सा था? 4 से 5 का था, 5 से 6 का था, 6 से 7 का था, we don't know, but he was writing letter and he had started before 1 hour. वो 1 घंटा पहले से ख़त लिख रहा था, तो he had been writing a letter for an hour. वो 1 माह से तस्वीर बना रहा था. He had been making this picture for a month. वो 1983 से इस मकान में रह रहे थे. They had been living in this house since 1983. Okay, now these are the same presentation questions. Okay, this was the complete lecture. Okay, as we have revised so many things here, जिसको नहीं, जो even जो आप लोगों ने written work में, assignments में, what the mistakes you have already done, I have also explained it to you. ठीक है. इवन आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, ये सारे डिफरेंसेस और ट्रांसलेशन को कैसे सॉल्व करना है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बट मे बी यू हैव फॉरगॉटन, दैट्स वाई यू हैव मेड सो मैनी मिस्टेक्स. नो प्रॉब्लम, आई हैव टोल्ड यू so many things what you have making mistakes in, so now it will be very convenient for you to solve. Okay, now was and were what. अच्छा, वन का आंसर दे रहे हैं अब्दुल्ला इश्तियाक. एक्चुअली दीज आर द सेम क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन. ठीक है. what helping verbs we use in the past perfect continuous tense. past perfect continuous tense में तो was and were use नहीं होता. you are wrong. okay, past perfect continuous में we use
अब आपने गलत दिया तो इसका सही जवाब भी दीजिए अब्दुल्ला इश्तियाक, काइंडली। You have done mistakes, so please correct it also. Abdullah Ishtiyaq, I am waiting for your reply, that of your right reply. If you haven't given the wrong answer, now kindly give me the right answer also. We had gone for picnic. Number 4. Okay. We are going for picnic. Yes, very good. Very good. We are going for picnic. We had gone for picnic. Has, have, Abdullah Ishtiyaq, has, have plus been also. ओके, इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वी यूज हैड के साथ बीन, और व्हाट यू आर सेइंग हैज एंड हैव, दीज आर द परफेक्ट परफेक्ट टेंसेस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब बता रहे हैं आप मुझे, एंड आई एम हेयर आस्किंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स आर हैड बीन, ओके, एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड प्लस बीन, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस में वी यूज बीन, और because it is past so we will use had. Zainab is giving me answer of question number 3. What are the helping verbs of past continuous tense? Very good, very good, no problem Abdullah. Please kindly note it down, okay, whatever the mistakes you are doing and I am correcting it, तो काइंडली नोट इट डाउन सो दैट इट विल नॉट बी हैपन अगेन, ठीक है, यही चीज़ आपको मंथली टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं करेगी इफ़ यू नोट इट डाउन इट, ठीक है, आपकी जो कॉपीज़ हैं यू कैन राइट विद द पेंसिल ओवर देयर, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कॉपीज़ को पेंसिल से गंदा कीजिए, ओके, उसको साइड पर एक बॉक्स बनाकर रफ वर्क में यू कैन राइट डाउन द सिली मिस्टेक्स व्हाट यू आर डूइंग, उसको करेक्शन करके लिखते रहिए, इट डजेंट मैटर, ठीक है, बट इट शुड बी इंफॉर्मेटिव थिंग, उसके अंदर कशीदाकारी नहीं करनी है आपने कॉपीज़ में पेंसिल से, ठीक है, डोंट मेक ड्राइंग्स, अपना नाम नहीं लिखना, हाँ, जो टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, द मिस्टेक्स व्हाट यू वर डूइंग विच आई ऑलरेडी करेक्टेड, वो आप उसके अंदर मार्क कर सकते हैं, लिख सकते हैं, टिक आउट कर सकते हैं, ओके, एवरीथिंग यू कैन डू विद द पेंसिल इन द कॉपीज़, बट डोंट विच इज़ नॉट रेलिवेंट, ठीक है, जो इरेलीवेंट चीज़ें हैं वो मुझे कॉपीज़ में नहीं चाहिए. Number 5, I talk to my mother. Make negative. Okay, I talk to my mother. ठीक, I did not. बेटे रोमेसा, when we use did not तो we use first form of the verb, ठीक है, talked will be changed into talk. Okay, I did not talk to my mother. No, you are making, okay, you are using right, ठीक है, did not आएगा मगर talked नहीं आएगा, ठीक है, टॉक आएगा क्योंकि हम डिड यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई वी विल यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. अच्छा, नाउ इट्स टाइम टू गो. हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ टेंसेस, ठीक है, सो वी विल इंशाल्लाह मीट नेक्स्ट वीक, इन द नेक्स्ट वीक ऑन मंडे एंड वेंसडे, एंड ऑन मंडे आई विल बी टेकिंग योर रिवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट क्लास ऑफ लेसन नंबर 2 and 3 विच इज़ कमिंग इन योर मंथली टेस्ट, ठीक है, मंथली टेस्ट इज़ ऑन थर्सडे, तो मैं मंडे को आपकी वो दोनों की रीइंफोर्समेंट एक क्लास रख लूँगी, ओके, आई विल बी रिवाइजिंग, आई विल बी ओवरव्यूइंग, आपको सारा एक ओवरव्यू कंपाइल करके 2 and 3 लेसन का आई विल बी गिविंग इट टू यू, ठीक है, so you can have your books also. Okay, okay Abdullah, thank you. हाँ, now you are right, was and were, ठीक है, तो we will be having again a revised class in the next week, ठीक है, inshallah we will meet on Monday. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz and bye.